Good evening, everyone, and wish you all a very happy and prosperous new year. Last calendar year was completely, it was like unusual in terms of macro factors. We saw substantial jump in the dollar index from the levels of 94 to 114. The bond yield, which was around 1.40 in the US, went to the levels of 4.40. And our currency, Indian currency, was around 73 levels. From there, it weakened to the levels of almost 83. FIs sold more than 2.5 lakh crores. Despite that, our markets managed to sustain and to maintain the gains of the last 2 years and fell less than 15% during the entire year. सो अगर पूरे साल को अगर आप देखें तो ये पूरे साल में हमने काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखा मैक्रो फैक्टर्स में, और कई बार हमने देखा है कि जैसे मैक्रो फैक्टर्स शेप अप होते हैं उसी के बेसिस पे इक्विटी मार्केट्स शेप अप होते हैं। लेकिन हमने हमारे मार्केट्स में इनफैक्ट काफी अच्छी रेजिलिएंट एक्टिविटी देखी, और हमने कई सारे चैनल्स में कई सारे एक्सपर्ट से यही सुना कि ये जो मार्केट था वो उसने काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया, और एज कम्पेयर टू डेवलप मार्केट्स, एज कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया जब मैक्रो फैक्टर्स में काफी बड़ी हलचल थी। अब जो मार्केट है, ये जो आने वाला मार्केट है, इस साल का जो मार्केट रहेगा, वो मार्केट का जो फोकस रहेगा वो पूरा माइक्रो फैक्टर्स पे रहेगा, पूरे फंडामेंटल्स पे रहेगा, वैल्यूएशंस पे रहेगा, और हमारे कंपनीज के वैल्यूएशंस कैसे हैं या हमारे ओवरऑल कॉर्पोरेट्स के वैल्यूएशंस कैसे हैं, उसी के बेसिस पे हमारे मार्केट्स में आने वाला जो साल है उसमें एक ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। ओवरऑल अगर ट्रेंड की अगर बात करें तो हमें लगता है कि जो फर्स्ट हाफ रहेगा वो काफी वॉचफुल रहेगा, यानी कि लोग काफी कॉशियस रहेंगे उसमें, और सेकंड हाफ में हमें लगता है कि अगर फर्स्ट हाफ में अगर एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर मार्केट में गिरावट अगर आती है, कुछ करेक्शन अगर आता है, तो सेकंड हाफ में हमें लगता है कि मार्केट में एक रिकवरी वाला ट्रेंड भी बन सकता है। बट इस मार्केट्स में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन्हें हमें और क्लोजली देखना जरूरी है, क्लोजली समझना जरूरी है, एंड टू नो ऑल दिस थिंग्स और मे बी मेजर फैक्टर्स। टुडे वी आर विद अस मिस्टर जतिन, who is going to present this particular monthly market strategy, and he's going to cover almost all the important factors which are either supporting to the valuations or supporting to the micro things of the market. So over to Jatin. Thank you, Srikant. Wishing all the viewers a happy and a prosperous 2023. So I'll share a screen with which we will start a presentation. So I'll take you to the market strategy and the broad investment thesis for the 2023 outlook 2023 by Kotak Securities, and what are the top picks for the month of Jan. So the key arguments or the key points that we will be discussing today would be on the recap on the last month and the 2022 recap. What is the take on the inflation, interest rate, the growth on the domestic market, valuation, and what are the investment ideas. So firstly, let's see what's happened last month and the entire year. So if you look at the last month, Nifty declined by almost 3.6% in the month of December. Mid cap and the small cap indices did better as compared to the large cap, and all the indices were in the negative territory except for the metal. Now metals did well because of the news coming from the China regarding the cut on the 3-year extension on the border control amid curbing COVID-19. But if you look at the overall 2022, as what Srikant rightly pointed out, we witnessed a very roller coaster ride in entire 2022, starting from the Ukraine crisis leading to the energy cost, then the inflation, then rising interest rate. But having said that, the broader market, if you look from the Indian perspective, closed almost 4% higher. Yes, large cap did much better as compared to the small and mid cap. And within the large cap, the broader indices which gave a better performance was PSUs, financials, and consumer staples. The things that happened in the month of December, RBI MPC hiked up in repo rate by 35 bips to 6.25%. Fed increased the rate by 50 bips. There was a surprise move coming from Bank of Japan.
and sharp surge in the COVID cases in China, which is again acting as a big headwind in terms of the overall performance in the emerging markets as well as the global market. Having said that, what will be the take on the Indian market? What will be the take on the valuations? I'll just take you in some point of time. Firstly, moving to the inflation. We believe that inflation, which was a concern in entire 2022, is relatively a lesser concern at this point of time. While being at elevated level, inflation is likely to be a relatively lesser concern as trajectory continues to decline. Why? Because if you look the overall freight cost, which has jumped almost 3 times from the start of the COVID till last year, the freight cost has come down 50% from its peak, which means definitely we'll see some respite and the benefit in terms of the freight cost supply side movement. And as well as the cost have normalized. While supply-led price pressures have reduced substantially, uncertainty will continue to remain on the energy prices. Given the geopolitical situation, demand pressure will recede gradually. So we believe that inflation level likely to remain at the elevated level and higher than the target for the developed economies. So for domestic market, we believe that the CPI inflation will be remaining to range of 5 to 5.5%, and core CPI will be closer to 6%. Having said that, now as we see a rising the interest rate, we have seen a sharp increase in the interest rate also. At the same point of time, bond prices came off sharply in 2022. So definitely, if you look not only in the domestic market, but globally also, US Fed raised its projection for interest rate and expect to keep them high until first half of CY24. Given the tight labor market, despite visible weakening of inflation, RBI MPC has expected hike the rates by 35 basis. We view this policy by RBI retaining is a hawkish bias, given the concern on the domestic market inflation trajectory. And we see the February policy decision likely to be a finely split between a last 25 basis hike and a pause, with a bias towards a hike. So definitely we believe that interest rate is likely to remain at the higher levels in 2023. And that can be one of the key reasons where we can see a money moving from the risky assets to the safer havens. In terms of the domestic growth, definitely there is a need for the fiscal consolidation, and government believes that the domestic GDP growth likely to remain in the range of 6.8 and 6% for 23 and 24. As central government need to reduce their gross fixed GFD by GDP sharply, the government markets borrowing is likely to be much higher than the pre-COVID levels. Indian bond markets are likely to receive some respites in FY24 from the moderation in the inflation, picking up of a monetary cycle, and fairly balanced bond demand supply dynamics. We expect the benchmark 10-year yield to be traded in the range of 7 to 7.5% in CY23, and the domestic growth likely to remain sluggish and will be shaped by the various external sector dynamics. Exports have slowed with a feed into a manufacturing sector, while resultant risk to a consumption will show up in the service sector. Domestic financial condition is also expected to remain tight. So in India, we expect the financial condition to remain tight and see the repo at 6.5% through FY24. However, the expensive valuation, which is trading at almost 22 times FY23 and 19 times 24 numbers, we believe it's on the expensive side. Now, because of the higher inflation and the yield gap, which is the difference between the earning yield loss and the bond yield, is on the higher side, which is a negative side in the historical context. And as a result, we believe that because of this, the valuation, in domestic valuation, India is trading at an expensive valuation. We expect a derating in the multiple of growth stock as market reconciles to its high rates to 2023, and there is limited acceleration in the economic growth. So factoring in the near-term headwinds, we have forecast that Nifty earnings to grow by 10%
In 23, 15.8%, in 24, and 15.6% in 25 respectively. At that levels, Nifty will be trading at 22.1 times, 19.1 times, and 16.5 times FY 23, 24, and 25 respectively. We believe these valuations are a little bit on the higher side. And as a result, if you look, we believe that the outlook for the 2023, we believe that the Nifty will likely to remain in the range bound level. And on the base case, we believe that the Nifty target of 18,717 factoring, and on the bull case, we expect the Nifty to trade at 19 times and a target of 20,919. So as a house, as a Kotak Securities, we expect for 2023 Nifty to remain in the range of 18,717 on the base side, and on the bull side, it will be in the range of 20,919. So factoring the headwinds, we believe that there are certain stocks which offer the good investment opportunity for month of January 2023 and as well as for the entire calendar year. So here are the top picks that we are recommending during this webinar. One is Cummins India, where we have a upside of 13%, Info Edge, Shriram Finance, Cipla, Policy Bazaar Fintech, TCI Express, Century Ply, and PCBL. So we'll take all these stocks in a detail. Firstly, on PCBL. PCBL, formerly known as Philips Carbon and Black, which is India's largest and 7th largest carbon black producer globally as per the management. We believe that company is better placed to cater the higher market share given their capacity coming up on incremental market share. Definitely, there is a concern in terms of the incremental demand coming in from the tire segment. But even if you assume that domestic industry grow by 8% and globally carbon black industry grow by 5 to 6%, there is enough room for the new capacity to get absorbed. And as a result, we believe that in the domestic market, the carbon black industry is likely to remain in the deficit for another couple of years. And hence, we expect the PCBL volume to grow at a CAGR of 10% during FY 22-25, supported by the new capacity. Not only the overall volume, but if you look at the overall change in the product mix, the company is going to see an incremental volume of 10,000 tons of specialty carbon coming in every year, which will not only help the operating performance, but gradually will improve the EBITDA per kg, which was 14.2 rupees in FY 22. We believe that to reach 16.2 by end of FY 25. So the strong earnings, leverage is below 1, and improving return ratios augurs well for the company. And as a result, we had initiated a coverage on PCBL in the last week of December, and we continue to recommend buy on PCBL with a fair value of 180, valuing the stock at 10 times FY 25 earnings. So that's all from my side. Over to Amit. Thank you, Jatin. Our next recommendation for the month of January is TCA Express. We have a buy rating on the stock with a target price of 2275. अगर आप TCA एक्सप्रेस का परफॉर्मेंस लास्ट 7 सालों को देखो तो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ दिया है. उन्होंने लेवरेज किया था अपना डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कंपनी का एक एसेट लाइट मॉडल है और उनके वेंडर्स के साथ उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है. कंपनी का जो बिजनेस क्लाइंट है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है और प्राइमरली लेस देन ट्रक लोड में ऑपरेट करता है. कंपनी का जो बिजनेस है वो ऐसा है कि उस सारे ट्रकिंग नीड्स के लिए कस्टमर खाली टीसी एक्सप्रेस के पास आ सकता है और कंपनी को काफी बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट ऑफ वॉल्यूम्स फ्रॉम एयर टू रोड. कंपनी का इंटेंशन और एग्रेशन भी काफी स्ट्रांग है और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी कंपनी को काफी फायदा हुआ है. ओवरऑल कंपनी क्लेम करती है मार्केट शेयर ऑफ 7% इन एक्सप्रेस इंडस्ट्री. अभी आगे जाके कंपनी इन्वेस्ट करेगी 500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years टू क्वाड्रपल इट्स सॉर्टिंग सेंटर कैपेसिटी एंड ऑल्सो टूवर्ड्स ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी. केपेक्स का सारा फंडिंग होगा इंटरनल एक्रूवल के साथ. We expect e-commerce, manufacturing, and medium and small and medium enterprises to be the key demand drivers for TCA Express going forward.
We also believe, after discussing all the points and investment in sorting sorted, we expect the company to report earning CAGR of 20% over the next 3 financial years with improvement in operating margins and healthy return ratios. We have initiated coverage on TCA Express in the first week of December with the target price of 2275 at 37 times FY25 earnings and a buy rating. So TCA Express is a buy with a target price of 2275. Over to Amarjit for his take on PB FinTech. थैंक यू अमित. सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पीवी फिनटेक. सो इस कंपनी के बारे में अगर मैं इसका अगर अर्निंग की बात करूँ सेकंड क्वार्टर का, तो इसका अर्निंग बहुत स्ट्रांग रही है. मेनली उसका रीजन था कि जो इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार, उसमें स्ट्रांग ग्रोथ आया है 55% का. अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यू इनिशिएटिव बिजनेस था उसमें भी रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रहा है. इसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग था. और कंट्रीब्यूशन फ्रंट पे देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 239 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे. और अगर हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है बहुत ही कम है कंपेयर टू ग्लोब. सो इवेंचुअली ओवर द पीरियड टाइम पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ेगा तो इस स्पेस में जो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा तो वहां पे पॉलिसी बाजार को काफी बेनिफिट होगा. अगर हम पॉलिसी बाजार का मार्केट शेयर देखें, अप्रोक्स 90% मार्केट शेयर है ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस में. सो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है. अगर ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट करें कि ओवर 22 टू 36% CAGR ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन फ्रंट. और मेनली उसका रीजन ये है कि हम देख रहे हैं कि ग्रोथ इंश्योरेंस में काफी आएगा, क्रेडिट बिजनेस में और न्यू इनिशिएटिव बिजनेस में आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंपनी का एबिटा देखोगे तो अभी लॉस कर रही है, लेकिन इवेंचुअली ओवर द पीरियड टाइम लॉसेस कम होंगे और वी एक्सपेक्ट कि एबिटा 2026 में पॉजिटिव हो जाएगा. और मेनली उसका रीजन ये है कि इंप्रूवमेंट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज. और अगर हम स्टॉक देखें तो अगर 52 वीक हाई से स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना चाहता है न्यू एज कंपनी में. और वी हैव 730 का फेयर वैल्यू विद बेस्ड ऑन द DCF. सो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है हमें. बाय रेटिंग है स्टॉक का. फॉर द नेक्स्ट स्टॉक ओवर टू अरुण. Thank you, Amarjit. In the wood panel space, we have Century Ply, which we like, and we have a buy rating and a fair value of 687. Now, Century Ply एक बहुत ही जाना माना नाम है वुड पैनल इंडस्ट्री में. अगर आप उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो काफी वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. दे आर देयर इनटू प्लाईवुड, जो कि उनका 50% से थोड़ा ज्यादा रेवेन्यूज देता है. देन ऑलमोस्ट अराउंड 20% रेवेन्यूज उनका लेमिनेट्स में से आता है, नियरली 20% उनका MDF में से आता है, और अराउंड 5% उनका रेवेन्यूज आता है पार्टिकल बोर्ड में से. तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है. वुड पैनल प्रोडक्ट की डिमांड काफी हेल्दी रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड हमने काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी है. और जैसे जैसे रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसके साथ जो रेडीमेड फर्नीचर की जो डिमांड आ रही है, वी थिंक दिस विल कंटिन्यू टू have a positive impact on wood panel products demand over the medium to long term. कंपनी ने काफी बड़ा केपेक्स अनाउंस किया हुआ है. कंपनी अपने सभी सेगमेंट्स में काफी इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो प्लाईवुड हो, लैमिनेट्स हो, पार्टिकल बोर्ड हो, MDF हो. सभी सेगमेंट्स में काफी केपेक्स आ रहे हैं, जो कि कुछ केपेक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ FY24 में आएंगे, सम विल स्टार्ट इन FY25. सो ये जो पूरे केपेक्स जो कंपनी कर रही है, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो ग्रोथ विजिबिलिटी काफी प्रोवाइड कर रही है. अगर रेवेन्यू अच्छी, डिमांड अच्छी रहती तो कंपनी विल हैव कैपेसिटीज इन प्लेस to capture that growth. The other thing, positive in this is that majority of this capex has been funded through the company's own money. So उनका debt बहुत कम रहेगा in case if they have to take debt, but majority of this funding जो भी capex ही होगी अगले 2-3 सालों में, वो through internal funding के through हो रही है. Now कंपनी की revenues आप FY22 में देखें तो उनकी revenues around 3000 crore rupees के आसपास थी. कंपनी के FY26 का टारगेट है revenue का around 5000 crore rupees का. So company is accordingly investing in capex for that particular to achieve that revenue number. EBITDA margin आप देखें तो EBITDA margin भी expected है थोड़ा improve होगा यहाँ से. इसका एक कारण ये भी है because product mix change होगा. MDF में और particle board में margins थोड़े high होते हैं as compared to plywood. So जैसे ऐसे MDF और particle board का revenue share कंपनी के overall revenues में बढ़ेंगे तो थोड़ा margins के लिए भी positive रहेगा. कंपनी का अगर रिटर्न रेशियोज देखें तो वी एक्सपेक्ट देम टू स्टे हेल्दी अराउंड 20% डिस्पाइट दिस ह्यूज केपेक्स दैट दे आर डूइंग.
वैल्यूएशंस में आप देखें तो हमने स्टॉक वैल्यू किया है 30 टाइम्स के पी पर उनके FY25 के अर्निंग्स पर। हाउ स्टॉक में लास्ट फ्यू मंथ्स में थोड़ा करेक्शन आया हुआ है एंड वी आर पॉजिटिव ऑन ऑप्टिमिस्टिक ऑन सेंचुरी प्लाईवुड with a fair value of 687. Over to Himalu. Thanks. Thank you, Arun. In the BFSI space, our pick is Shriram Transport, and we have a buy with a fair value of 1675. As we all know that the company and Shriram City Union have merged, and the business model now looks very promising. It will be a more diversified business model with a mix of CVs or commercial vehicles, SME loans, personal loans, and consumption loans. And we expect Shriram Transport to toggle across this business segment, which is also a natural hedge from a business model perspective. With the merger, Shriram Transport is now the second largest retail NBFC with benefits in cost of funding and rating as well. Therefore, this model looks very promising and it is less risky because earlier they were dependent on only one product segment or a couple of product segments in terms of Shriram City. However, we will be watchful of how the execution pans out for the company. We have a buy on the stock with a fair value of 1675. I hand it over to my colleague. Thank you, Himali. So next stock that we are discussing is Cummins India, where we have buy recommendation and at fair value of 1560. अगर Cummins India की बात करें तो this is in a diesel engine space and they also have capability in the alternate fuel engines. So it's a leading manufacturer in the engine space and largely serves to the electrical power generation engines for industrials and commercial establishment. तो अगर की positives की बात करेंगे अब Cummins India का जो strength है वो अगर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में there is a stiffer emission norms and there is a we are also talking about CPCB4 in the power generation segment. So ये जो जुलाई से 23 से जो भी stricter emission norms implement होंगी तभी Cummins India को एक काफी बड़ा edge मिलने वाला है because they already have the products and they would enjoy better margins vis-a-vis its peers due to this change in the emission norms. इसके peers की बात करेंगे तो recent quarters में peers like Kirloskar ने काफी अच्छा margin दिखाया है, gross margin particularly, because वो लोगों ने price hike लिया है to pass on the raw material impact. But on the other hand, Cummins gross margin has compressed on a YOY basis. So this reflects that there is a potential for Cummins to increase its pricing and enjoy better margins in the coming quarters. Beyond pricing, अगर कंपनी का बिजनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का बात करेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छा एक ग्रोथ ट्रैक्शन देख रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द एक्सपोर्ट साइड देयर इज enough opportunity. There's advantage with the Cummins because of the change in the emission norms, so which the competitors might not be having that to that extent. Cummins is a clear market leader in the engine space, and it is going to get benefited from increasing investment in the data center, so that will give them more opportunity in future. Further, the royalty payout to the parents have also been reducing, so that is another positive for the company. So we have recently increased our gross margin estimates by 60 bips, but we still see enough potential for further upgrade in the margin in future because जो current gross margin है, that is still far away from what it was in the during the earlier times. Apart from that, we expect the earnings of the company to grow at 20 to 25% in next 2 years, and stock is trading at 25 times. However, the ROE is quite strong, more than 20%. So we have a buy recommendation on Cummins with a fair value of 1560. Over to Michael. Good evening, everyone. So our pick from the pharma space is Cipla. So Cipla's US pipeline provides us the confidence over medium-term growth. Moreover, its compelling growth story is beginning to unfold and is gaining ground across the key markets.
Another thing to note is that the company is on track to launch G-Adware in second half of the year, of the financial year. And it's sharpened focus on domestic RX, US generics, and strong delivery of cost efficiencies. So we forecast earnings CAGR for the company of 26% over FY22 to 25. And we raised its fair value or target price to 1,295 from 1,215 earlier, which includes NTV of rupees 22 per share from Revlimid. That's all from my side. I hand over to Sumit sir. थैंक यू. मुझे बुके बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी काफी पसंद होंगे. मुझे बुके इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें काफी वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं. Similarly, I like companies having spectrum of brands, business, revenue streams. Why? Because it creates multiple revenue avenues for the company. It diversifies my risk. तो एक बिजनेस अगर अच्छा नहीं भी कर रहा हो तो दूसरा अच्छा करेगा तो उसको कवर अप कर लेगा. ऐसे बिजनेसेस मुझे काफी अच्छे लगते हैं. So today I will be presenting you a company which has multiple brands and huge value unlocking potential. When I'm saying unlocking value unlocking potential, मेरा कहने का मतलब है कभी ना कभी इन बिजनेसेस को सेपरेटली लिस्ट कराएंगे जब वो एक साइजेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे. मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ इन्फो एज की. इन्फो एज इज इंडियाज प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी with a business portfolio of brands like Naukri.com, 99acres.com, Jeevansathi.com, Shiksha.com and many other. इन सबके मोस्ट ऑफ द अपन सबने नाम सुने हुए हैं, फेमिलियर हैं नेम्स से. तो काफी ऐसा है जो कि बिजनेस अपने को दिख रहा है सामने की हो रहा है उसमें. In a space where most firms are struggling to monetize, InfoEdge is one of the few sectoral companies making money. Isn't that a big positive? And also it tells a lot about management thought process कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. They don't want to bleed. What is that which we like the most about InfoEdge? कुछ तो बहुत यूनिक होगा उसका जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं. We like the company's market leading position in recruitment and real estate classified space. मेरे को काफी इन्वेस्टर्स ने पूछा कि आप सर इतने कैसे वैल्यू करते हैं इतने डिफरेंट फ्लावर्स को इस बुके के अंदर. तो मैं आपको बताना चाहूंगा वी वैल्यू InfoEdge using sum of the parts valuation method. We have valued Naukri business at 40 times price to earning multiple. 99 acres is valued at 10 times. Based on SOTP, we have arrived at a fair value of 4,900 rupees and recommend ad rating. ये कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करेंगे तो काफी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया इसमें सेपरेट बिजनेसेस हैं जो सेपरेटली लिस्ट हो सकते हैं, पोटेंशियल है उनमें, तो कभी ना कभी जाके उनकी वैल्यू अनलॉक होगी और हमें एक काफी हैंडसम रिटर्न स्टॉक दे सकता है. सो दैट वाज a quite an informative session so far. The macros and stock specifics are concerned. Now I hand over the call to Rini. Thank you, Sumit sir. Now I think we can open the floor for Q&A. Our research team is here to answer any of your questions related to markets, stocks, and sectors. So grab this opportunity. Starting with the first question we have. So Dharmendra Mishra is asking for the target and view on Bharat Electronics, BEL. Pankaj sir, can you take this one? Sure. So on Bharat Electronics, हमारा जो reduce rating है और target price 100 रुपए है. हमें ये लगता है कि स्टॉक अभी करंट प्राइस पे फुल्ली वैल्यूड है. अगर आप लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे, रिजल्ट्स काफी अच्छी रही थी एग्जीक्यूशन एंड मार्जिन में. इवन लेकिन द ऑर्डर बुक की अगर बात करेंगे Q2 में जो ऑर्डरिंग वीक रही थी एंड कैश फ्लोज भी वीक रहे थे. लेकिन रिसेंटली कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर जो बैटरी पैक्स का जो करीबन 8,000 करोड़ का ऑर्डर ऐड किया, उससे ऑर्डर बुक में एक स्ट्रेंथ आई है.
एंड ओवरऑल अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वहाँ भी एक लॉन्ग टर्म में एक अट्रैक्शन रहने वाला है, पर्टिकुलरली जो इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से एक बेनिफिट्स आएंगे कंपनी को. हमें लगता है कि वी कैन वेट फॉर करेक्शन एंड देन वी कैन लुक एट दिस टर्म. Thank you, Pankaj sir. Next couple of questions are from metal space. Jatin, so Amrish is asking for views on Tata Steel, and Nirmal wants to know target on sale. Thank you, Rini. So I'll just give you a brief on the ferrous space, what is the outlook, and then probably we'll take what is our target and the rating on Tata Steel and SAIL. So if you look, yes, the metals is back in focus in last few days because of the China reopening euphoria and expectation of recovery in margin in the third quarter of FY23, which is December ended. Now, why do Street expect there could be a recovery in margin? Is because of the lower coking coal cost. But after the recent rally, we believe that the metals or a ferrous offers an unattractive risk reward. Why? Because if you look, domestic steel prices have corrected by 3 to 4% in the month of December, led by demand pushback on price premium to imports. And most important, the expansion in margin that we will be witnessing in third quarter appears to be challenging because we believe that iron ore price have bottomed out, so there will be an increase in the cost curve. There's a downward pressure on the steel prices because of a demand pushback, and export markets continue to remain weak. So taking all these points into consideration, we as a house, the Kotak Securities, continue to maintain our cautious stance on the metals and mining space. And coming to a specific target on Tata Steel, definitely we have a reduced rating on a Tata Steel with a fair value of 150, whereas on SAIL, we have a sell rating with a fair value of 55. Thank you, Jatin. Next question is for Sumit sir. Sir, Manthan is asking for your view on GAIL. गेल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ऐसी कंपनी है जो अगेन काफी डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन में, पेट्रोकेमिकल में भी है, गैस ट्रेडिंग बिजनेस में भी है, जहां पे यूएस से गैस परचेज करके यूरोपियन मार्केट्स में भी सेल कर देती है और अदर मार्केट्स में सेल करती है. बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इतने ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जिसके कारण कंपनी की अर्निंग्स विजिबिलिटी में एक प्रॉब्लम होती है. जहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है, इन्वेस्टर्स ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दैट कंपनी एंड दैट सेक्टर. सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्लस टू मच कमोडिटी रिस्क के कारण हमें ये कंपनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, प्लस जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण सप्लाई इश्यूज भी हो रहे हैं गैस के, तो इसको काफी हिट भी लग रहा है. सो हमको लगता है कि गेल का हमारा सेल रिकमेंडेशन है विद फेयर वैल्यू ऑफ 75 रुपीज. If somebody wants to switch from GAIL, then he should switch to city gas distribution companies, जहां पे pricing power उनके पास ज्यादा है as compared, business risk कम है as compared to GAIL. So आप GAIL की जगह IGL या MGL prefer कर सकते हैं, where we are bullish. As of now, we are not bullish on GAIL, and we have a sell recommendation on the stock. Thank you, Sumit sir. So one of our participants, Sunil Rao, is asking what is the holding period for all the stocks recommended by the panel. So Sunil, all stocks recommended today are for 12 months period. Moving on to next question from banking space. Himali, Anil Kumar is asking for your views on PSU banks and PSU industries as a whole. So I will speak for the banks. Overall, the banking sector is in a very strong fundamental position. And we have seen the improvement in practically all metrics for the banks, especially PSUs, because their base was very low. And with that, we have seen the run-up in prices of PSU banks. Most of the PSU banks, out of the 5 that we cover, which is SBI, PNB, Bank of Baroda, Union Bank, and Canara Bank, most of them have run up to an extent that they are very close to a fair value, except for SBI. We still see more upside for SBI. So as far as the PSU banking space is concerned,
especially coming out of the corporate NPL cycle and whatever has happened to them in COVID. Now they are in a very sweet spot. That is what something the Reserve Bank of India has also mentioned in its recent reports. Therefore, we are positive on the sector, but they are very close to a fair value because they have run up quite a bit. Thank you, Himali. There's one more question from banking space. Can you share your views on PNB? So PNB, again, the similar story that we have, I have just said on PSU banks. It is currently trading at a fair value above our fair value. So the only bank that is still got some upside is State Bank of India. So what we would suggest is that despite the strong fundamentals, we would suggest them to be selective based on valuations. Thank you, Himali. Next question is for Amit sir. Amit sir, Ajit is asking for views on Tata Consumer. And there's one more query on all cargo logistics. Yeah. Ajit, we have an ad rating on Tata Consumer with a target price of 785. कंपनी का जो बिजनेस है वो टी, कॉफी, बेवरेजेस, फूड एंड ग्रोसरी और स्टारबक्स का है. Q2 FY23 का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग था. डोमेस्टिक वॉल्यूम्स थोड़े से सॉफ्ट थे बट रीजनेबल. There was decent recovery in India business margins and overall overseas business भी काफी decent था. कंपनी का जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है वो बढ़ चुका है और it should augur well for business growth in the medium term. Recently कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी एंटर कर चुकी है. Company is continuously restructuring all its business and bringing similar businesses under one roof, which we believe will add value to the company in the long run. Strong innovation, product premiumization in salt, tea, Sampan and Soulful in Indian market is expected to drive sales and margins. Recently, media reports say that Tata Consumer is in talks with Bisleri to acquire Bisleri for approximately 70 billion rupees, that is 7,000 crores, which is at 30x FY23 earnings for Bisleri. We believe if acquired at reasonable valuation, it will add lot of value to Tata Consumer. So overall all businesses are doing very well for Tata Consumer and we are positive on the stock with the ad rating and the target price of 785. Thank you, Amit. Next stock, that is Alcargo, we are positive on that also. We have a buy rating on the stock with the target price of 520. कंपनी का आप recent performance देखिए तो बहुत ही strong था despite lockdown and there was pent up demand. In fact, Alcargo का last 6 quarter का performance देखे तो बहुत ही strong रहा है with a very diversified business model and proactive management. जो multimodal transport operation segment है has been showing sustained growth on the back of volume expansion and transformation initiatives taken by the company. And जो container freight station division है, it is also delivering very well. Express logistics under Gati has been doing well also since the last 6 quarters. We believe जो first half का performance है वो second half में भी reflect करेगा और हम लोग stock पे positive है और हमारा target है 520 रुपया with the buy rating. Thank you, Amit sir. Next question is from the auto space. Roop is asking for views on auto sector overall and Tata Motors. Arun sir, can you please take this one? Sure. Overall auto space में आप देखेंगे तो इनफैक्ट yesterday over the weekend and yesterday numbers आए हैं auto numbers के. वहां पर हमने स्पेसिफिकली ट्रैक्टर साइड में हम वॉल्यूम्स हमने अच्छे देखे हैं. कमर्शियल व्हीकल्स में भी हमने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छे वॉल्यूम्स देखे हैं. पैसेंजर वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक थे, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे. टू व्हीलर्स में हाउएवर वॉल्यूम थोड़ी वीकर साइड पे थे. करंटली जो हमारा टॉप पिक ऑटो सेक्टर में है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है. द रीजंस व्हाई वी लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एक तो उनका जो ऑटो बिजनेस है देयर वी आर सीइंग गुड ट्रैक्शन, जो उन्होंने काफी न्यू लॉन्चेस किए हैं, सो दैट हैज बीन डूइंग वेल फॉर देम. द सेकंड इज लास्ट 4 या 5 महीने के अगर आप वॉल्यूम नंबर्स जो ट्रैक्टर के हैं वो देखेंगे तो वहां पर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हैं. अभी
इसके पहले कि हम डिक्लाइन देख रहे थे, बट लास्ट 4-5 मंथ्स में हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर बिकॉज ओवरऑल वैल्यूएशन में ट्रैक्टर इज अ बिग पार्ट ऑफ फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा. थर्ड जो उनका अदर रीजन है वो वैल्यूएशन है. वैल्यूएशन वाइज आप बाकी दूसरे स्टॉक से कंपेयर करेंगे, महिंद्रा इज स्टिल प्रिटी इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर ऑटो स्टॉक्स. तो वहां भी हमें काफी कंफर्ट आता है. तो ओवरऑल टॉपिक अगर आप ऑटोस में देखेंगे तो वो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू अराउंड 1435 है. टाटा मोटर्स में हमारा फेयर वैल्यू 420 है, रेटिंग हमारी ऐड है उसके अंदर. टाटा मोटर्स में अगर उनका जेएलआर बिजनेस देखें तो वहां पर परफॉर्मेंस थोड़ा ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, बट दैट विल टेक टाइम बिकॉज अगर हम यूरोप में रिसेशन की बात करें या यूएस में रिसेशन की बात करें हैं, विच मीन्स की जो रिकवरी हम जेएलआर में देख रहे हैं दैट माइट टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम. डोमेस्टिक साइड पर कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ग्रो हो रहे हैं, तो द कंपनी हैज बीन डूइंग वेल, मार्केट शेयर गेन कर रही है स्पेसिफिकली इन दी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट. सो टाटा मोटर्स में थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा, हमें उसे ग्रेजुअली ऐड करना होगा डिक्लाइंस पर, और वहां हमारा 12 मंथ प्राइस टारगेट 420 रुपीज. थैंक यू. Thank you, Arun sir. Next two questions are from IT space. So Sudhit sir, Nirmal wants to know your views on Tech Mahindra and Bala Subramaniam on Wipro. Coforge. No, Second, Tech Mahindra and Wipro. Tech Mahindra and Wipro. Okay. So we are bullish on Tech Mahindra. In fact, fair value is quite attractive. Fair value is 1,200, and which gives a decent potential upside from current price. So as we all know, Tech Mahindra is known for its telecom USP. They are the best capability so far telecom sector is concerned, and they are banging on 5G technology, which has already been launched in India on a trial basis. So we believe going forward, as this 5G technology will scale up, Tech Mahindra is going to get benefited a lot. With the if I talk about valuation, the stock is attractively valued, though entire sector is in doldrums right now because of the geopolitical about the recession issues in US and slowdown in Europe. So it might take some time for the stock to run up, but this is a good stock, and we are recommending buy with a fair value of 1,200 rupees. Coming to your next stock, which is Wipro. We are not very positive on Wipro, mainly because of the type of aggression which we have seen in management of Wipro, that is not up to mark as compared to other larger peers like TCS and Infosys. So, and the transformation which they are doing is taking a little extra time, and hence we recommend to shift from Wipro to Infosys or TCS. Infosys has got a better upside, so we suggest stick to Infosys or HCL Tech in a larger space. Wipro, we are recommending reduce, and overall you can look for, as a top pick in the IT space, you can look for Infosys, HCL Tech in the larger space, and tier 2 you can look for Emphasis. Thank you, Sumit sir. Next question is from Raj Simha. He's asking for the list of 5 mid-cap companies which may grow this year. Shrikant sir, would you like to take this one? इनफैक्ट अगर आज के प्रेजेंटेशन में हमने कई सारे मिड कैप कंपनीज को ही शामिल किया है, क्योंकि कई सारे लार्ज कैप कंपनीज अपने फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, और एक्सेप्ट सिप्ला अगर आप देखें तो पूरे लिस्ट में जो भी हमारे स्टॉक के जो लिस्ट है, इस बार जो हम लोगों ने स्टॉक रेकमेंड किए हैं टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज, उसमें अगर आप देखें तो अगर कोई बेस्ट टॉप 4-5 पिक्स अगर मैं कहूँगा तो सभी को मैंने इंक्लूड किया है ऑलमोस्ट ऑल, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्सिफाइड हमने व्यू रखा हुआ है। पीसीबीएल जो फिलिप्स कार्बन कंपनी है, अराउंड 130 के करीब अभी ट्रेड कर रही है, 180 यानी कि ऑलमोस्ट 40-45% का 40 to 42% का रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीसीआई एक्सप्रेस जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, यहाँ पे भी हमारा बुलिश व्यू है। सेंचुरी प्लाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में है, और श्रीराम फाइनेंस के साथ साथ पीबी फिनटेक
जो एक पॉलिसी बाजार करके जो कंपनी है, जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ चुकी है और स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने की परफॉर्मेंस भी हमें दिख रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि इन्फो एज भी एक मिड कैप आईटी कंपनी है और कमिंस इंडिया। तो बाय एंड लार्ज हमें लगता है कि इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करें, और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छे पैसे आने वाले 12 महीने में बन सकते हैं। यहाँ से अगर कोई करेक्शन भी अगर आता है तो ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि आप इन्हीं कंपनीज के ऊपर फोकस करें और इन्हीं कंपनीज के साथ आपका इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। Thank you, Shrikant sir. Next question is from Abhyudit. He is asking for views on Praj Industries. Pankaj sir? Yeah, sure. Yeah. So, Praj, we are very much positive on the company. We have a buy recommendation and we have a target price of 500 rupees. So, Praj हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी गवर्नमेंट के जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उससे काफी ज्यादा बेनिफिटेड रहेगी। Company का order inflows has been quite strong for last 5-6 quarters. If you look at, they've been adding around 900 to 1,000 crore kind of orders. और करंट ऑर्डर बुक भी करीबन 3,300 करोड़ काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। स्टॉक में एक करेक्शन आया है पोस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन करीबन 250 बिप्स से डिक्लाइन हुई थी एंड ओवरऑल एबिटा मार्जिन आर आल्सो डिक्लाइन बाय 100 बिप्स। हमारा ये मानना है कि ये एबिटा मार्जिन जो कि 7.5-8% के अराउंड है, इट कैन इंप्रूव टू मोर देन 9% इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं एंड जो रिसेंट ऑर्डर्स जो प्राज को मिली है वहां पर उनको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। On the valuation front also, the stock is trading at attractive valuation, we believe at 20 times on a forward basis, and the company is generating very good ROE, ROC. फ्यूचर में भी जो गवर्नमेंट का फोकस है कि क्लीन फ्यूल एंड ओवरऑल बायोफ्यूल पे जो फोकस है, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन पे फोकस है, इसकी वजह से प्राज को बेनिफिट मिलेगा। सो ऑन प्राज वी आर वेरी मच पॉजिटिव। वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ 500 rupees विद अ बाय recommendation. Thank you, Pankaj sir. Now, due to time constraint, I'll take one last question. Jatin, Gigi is asking for thoughts on steel sector. So, Gigi, I've already said my view, stating that definitely the steel stocks have rallied in the recent past because of the China euphoria on the reopening and the expectation of the recovery in margin in the Q3 as compared to what the company reported in Q2. Having said that, our concern is that the margins that the company that will report in Q3, further expansion looks like challenging, because we believe that the raw material price such as iron ore is more or less bottom out, and we see a upside in the overall iron ore prices. Secondly, domestic prices are likely to remain little bit on the softer end because of a demand pushback, and export markets continue to look weak. So factoring all these three conditions, we believe that yes, that is a big headwind for the ferrous companies in terms of expansion in the margin, and hence we continue to maintain our cautious stance on the entire steel space, except for NMDC. Thank you, Jatin. So with this, we have reached the end of the webinar. So, Shrikant sir, would you like to give any closing remarks? या श्योर। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर आने वाले साल में अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें, जहाँ पे हमने कई सारे इनफैक्ट सेक्टर्स के ऊपर बात कर लिया, लेकिन हमें लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस मार्केट में, या तो अगर ट्रेड करना है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो मार्केट है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुका है, और यहाँ से अगर मार्केट में कुछ जो आने वाले दिनों में जो फैक्टर्स है, जैसे कि इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे, Q3 के जो क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम के जो नंबर्स थे वहां पे एक हमने कह सकते हैं कि हम लोगों ने इन लाइन एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस दिखाया था कंपनीज ने, लेकिन अगर इस बार अगर वो परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो फिर यहाँ पे जो मल्टीपल्स होते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आता है, वहां पे थोड़ा सा कटिंग आता है, और उस वजह से मार्केट में हम एक करेक्शन देखते हैं। तो ये जो Q3 के जो नंबर्स रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर इन कंपनीज ने या कॉर्पोरेट्स ने अगर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस अगर नंबर्स अगर रिपोर्ट अगर कर दिए,
अगर आईटी जो एक सबसे बड़ा सेक्टर है कि जहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन है, या तो मैं कह सकूंगा कि एक क्लियर कट व्यू बना हुआ है कि शायद यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा आया, या तो गाइडेंस अगर अच्छा आ गया, तो फिर हमें लगता है कि इस मार्केट में हमें एक रिबाउंड देखने मिलेगा। इसके अलावा हमें लगता है कि फोकस करना है बीएफएसआई के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज यहाँ पे फोकस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें लगता है कि जितने भी कंपनीज है वहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। और ये पूरा सेक्टर जो है वो एक इस पर्टिकुलर साल में एक एक्शन में रह सकता है बिकॉज ऑफ कैपेक्स स्टोरी। तो कैसे कैपेक्स आता है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फिर हमें लगता है कि बिल्कुल इस सेक्टर में काफी एक पॉजिटिव व्यू बनेगा। और कई सारे स्टॉक्स है कि जो हम कंसिस्टेंटली रेकमेंड करते रहते हैं, जैसे कि थर्मैक्स है, कमिंस इंडिया है, लार्सन है, और इसके साथ साथ कुछ इंफ्रा कंपनीज है, आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी। तो ये सब टॉप कंपनीज में परफॉर्मेंस देखने मिला है और हमें लगता है कि ये जारी रहेगा। ऑटो कंपनीज में नो डाउट कि थोड़ा सा स्लगिशनेस अभी भी है, लेकिन टाटा मोटर्स है या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वहाँ पे फोकस बना हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी अरुण ने उसके ऊपर बात कर ली है। मेटल एक ऐसा है कि जहाँ पे हमें कुछ अलग सरप्राइजेस मिल सकते हैं अगर चाइना अगर रीओपनिंग के लिए अगर जाता है, और अगर वहाँ पे अगर काफी अगर काफी अच्छे अगर परफॉर्मेंस अगर आने लगते हैं, या तो अगर चाइना अगर अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो फिर हमें लगता है कि मेटल में भी हमें री रेटिंग शायद देखने मिल सकती है। तो एक ब्रॉडर अगर इस मार्केट को देखें तो इवेंट्स अगर कंपेयर करेंगे तो इवेंट्स के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा इवेंट क्वार्टरली नंबर्स है। इसके बाद अगर कोई इवेंट अगर आ रहा है तो जो फेड की जो मीटिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें कैसे इन्फ्लेशन के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर काफी एक व्यू बनेगा। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, कीप बाइंग ऑन डिप्स। हमें लगता है कि इस मार्केट में अगर करेक्शन भी आता है तो पिछले जो लोज थे पिछले साल के जो 15,500 के करीब के, आई थिंक मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दोज लेवल्स। ऑन द हायर साइड हमें लगता है कि 19,000 के करीब कंसिस्टेंटली सेलिंग रहेगा। और अगर इन सब जो भी एक्सपेक्टेशंस अभी जो बने हैं, जो कंसेंसस बना है, अगर उस कंसेंसस के अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें लगता है कि इस मार्केट में बड़ी तेजी देखने मिलेगी। तो इन ब्रीफ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और कीप एडिंग गुड कंपनीज टू योर पोर्टफोलियो। और हम हमारे प्रेजेंटेशन में, वेबिनार में हमेशा ही उन कंपनीज को रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो अपसाइड होती है वो काफी डिसेंट होती है। तो कीप अटेंडिंग आवर वेबिनार्स, जो भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप, वहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंटली आइडियाज मिलती रहेंगी। हमने हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल को भी काफी बढ़ा दिया है, और अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कई सारे प्रोडक्ट्स भी देखने मिलेंगे। That's all. Thank you, sir, and everyone who joined us today. Hope you liked our webinar and hope your queries were answered today. So if not, you can come back again next time. And as Shrikant sir said, do not forget us to follow us on our social channels like Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already. Thank you. Thank you.